Hello, guys. Good morning. How are you all? कैसे बेटा कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम गुड. देवू माल्य गारू नमस्कार. कैसा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग अनस. सो कैसे चल रहा है प्रिपरेशन? मेसी अंकुल, हाउ आर यू? कैसा हो गया? हेल्थ अच्छा हो गया? आजकल मेसी गारू बहुत खुश में चल रहे हैं. कह रहे हैं इस बार डब्ल्यू में कंटेंट ज्यादा है. मैं ऐसा नहीं सोच रहा है. मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है देवू मालिया. इरिगेशन होगा. ओके, इरिगेशन वी स्टडी लॉट अबाउट डैम्स, वेव्स, बिकॉज आईएएस एग्जाम ना, आईएएस एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आएगा इरिगेशन में. डैम्स, वेव्स, स्पिलवेज, इनका बारे में बहुत ज्यादा बात किया. एनवायरमेंटल कंटेंट विल बी सेम एवरी टाइम, but maybe notes writing we are giving some extra points, theory points, because again MSQs are there na. For MSQs we are writing more theory. Previously we focused on numericals more last year, IIT कानपुर न्यूमेरिकल. सो अभी थियरी में थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एमएसक्यू दे रहे हैं. वो एनवायरमेंटल से पक्का एक क्वेश्चन एमएसक्यू आएगा, एक या दो आएगा एनवायरमेंटल से एमएसक्यू. एंड स्पेशली आईएएससी. आईएएससी ना कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा. आईएएससी विल बिकम मोर कॉन्सेप्चुअल. सो आई एम गिविंग मोर थियरी नोट्स. दैट इज व्हाई मोर थियरी नोट्स कमिंग टू यू. चलो, वी आर सॉल्विंग सम आईएएस क्वेश्चंस आल्सो टू मेक यू मोर स्ट्रांग. गुड मॉर्निंग महिमा. दैट इज व्हाई आवर्स इंक्रीज हो जाएगा ना. आवर्स ज्यादा हो जाएगा ना देखो मालिया. हाँ, विदाउट थियरी एमएसक्यू नहीं हो जाएगा. विदाउट थियरी एमएसक्यू नहीं हो जाएगा. चलो, एनी डाउट्स क्रैशिंग के बारे में? कुछ डाउट्स है? कुछ डाउट्स है क्रैशिंग के बारे में? जिंदगी में हर एक चीज में इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना देबू. सेम लगा तो लाइव अटेंड करने का जरूरत क्या है? रिकॉर्डेड में चल जाएगा. जिंदगी में हर एक चीज का लिए कल नहीं आएगा. अरे कल यही एग्जाम है. ओके, ऑल द बेस्ट. अच्छे से लिखो, थोड़ा ऑप्शंस देख के आंसर दे दो. सो नो डाउट्स, आई होप सो फॉर क्रैशिंग. क्रैशिंग के लिए कोई डाउट नहीं. नेगेटिव मार्क नहीं होगा तो का मार्क आ जाएगा क्या? इंट्यूशन में चलेगा. वायरल गारू का इंट्यूशन इतना अच्छा रख दिया. ये अनअकैडमी को मैनेजमेंट मीटिंग अटेंड किया वायरल भैया. ये बोल रहा है पोल में कौन कौन गलत करेगा इनका नाम दे के बोलो, ऐसा बोल रहा है. यू मस्ट शो दोज हु आर गिविंग रॉन्ग आंसर्स इन द पोल, ऐसा बोल रहा है. Activity and its cost slope given. Minimum amount spent. This is the most expected gate model from crashing. Minimum amount spent to reduce project duration by 1 day. To reduce project duration by 1 day. Oh, very nice to hear. So कल कुछ स्पेशल क्लास भी नहीं लगा देंगे? No other classes, special classes also tomorrow then. Take rest, अच्छे से पढ़ लो. So minimum amount spent to reduce project duration by 1 day. So first we need to write all paths. What are the different available paths? EAD 6 days. ACE 12 days. BE 6 days. So you are going to crash ACE, any of the activity. Any one of the activity to be crashed. ACE. So what are you going to crash? A 70 rupees, C 60 rupees, E 80 rupees. Which activity are you going to crash? Which activity are you going to crash? So you are going to crash. You are going to crash C. C crash करो. So crash cost. This is answer. हो गया काम. समझ आ रहा है बेटा? कोई मुश्किल हो रहा है क्रैशिंग अभी? कुछ मुश्किल हो रहा है क्रैशिंग के बारे में? 1 minute guys. चलो, 60 रुपीस आ गया क्रैशिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अरे बाबा, क्वेश्चन लिखो. Because highest duration, Abhishek, we are having highest duration. 1 minute guys.
Abhishek, this is already discussed in all the previous topics. You are new here, that is why you are confusing. 6 days, 12 days, 6 days. Different paths are there. So what is the maximum longest duration? So you need at least this one. 12 days is longest duration, Abhishek. So to finish project, what is required? Minimum required. At least you need 12 days to finish the project. At least 12 days. कम से कम. नहीं होगा project खत्म नहीं हो जाएगा. So if you want to reduce by 1 day, you can reduce this 12 to 11. That is required. Na? Clear? So whose number of days you can reduce? Either A or C or E. Any activity 1 day you have to reduce. In any activity 1 day you have to reduce. Yes or no? Any activity 1 day you have to reduce. Na? So from that any activity who is having lowest cost slope, that we are considering. Lowest cost for crashing. Lowest cost for crashing we can use this one. 60 rupees. Chalo. Activity predecessor, normal time, normal cost, crash time, crash cost. So this is provided. We need to find minimum amount required to reduce project by 2 days. 2 दिन कम करने के लिए project के लिए what is the lowest possible amount required? So first need to draw network diagram. Need to draw network diagram. So AB coming over here. AB coming over here. Next CD coming originate from AB. But finally they are ended up at E. Aman garu absent today. Amanji. 56874. 56874. So paths are 5 plus 8 plus 4, 17. BDE 6 plus 7 plus 4. Oh, both are critical paths only now. देखो दोनों critical path चल रहे हैं, हर एक activity critical activity only. Every activity is a critical activity. Every activity critical activity. Then you need to find out cost to slope for every activity. Cost to slope for every activity, please. First one 175, 200. Next one 150 or 50. Messi garu check karo 150, 250, 500. Chalo. So you need to reduce 2 days. You need to reduce by 2 days. So first lowest is having C. Okay. So I have reduced C by 1 day. Cost is 150 rupees. It is reduced to 16 days. Then what is project duration? ACE path is reduced to 16 days. Crash time. What is the CP now? ACE path को C को reduce कर दिया एक दिन C को reduce कर दिया. But CP will become BD. Still required ना? Is project duration reduced? बताओ बेटा. Project duration reduced? No. Project duration reduce नहीं हो गया, BDE में reduce करना पड़ेगा. So you can reduce for B. B को कम करो. So you are reducing B 1 day. So it is now 16 days. So for C 150, for B 200, total 350 rupees for 1 day. This is for 1 day only ना? समझ आ रहा है बेटा? You must reduce or you must crash both the activities B and C. Both the activities B and C, so that only you can crash by 1 day. Is that clear? पहले एक दिन क्रैशिंग खत्म हो गया, इनका कास्ट 350 रुपीस. और किसी को डाउट है इनके बारे में? पहले एक दिन क्रैशिंग हो गया, BDE में लोएस्ट पॉसिबल क्रैशिंग फॉर B, BDE में लोएस्ट पॉसिबल क्रैशिंग फॉर B, ACE में लोएस्ट पॉसिबल क्रैशिंग इज फॉर C. सो दोनों फ्रॉम BDE पाथ एक्टिविटी B, फ्रॉम ACE पाथ एक्टिविटी A, दोनों क्रैश करा दिया. स्टिल CP इज 16. सेम कैसा हो गया? 16 रिड्यूस है ना मेसी. क्रैश करने के बाद 1 डे रिड्यूस हो गया, 1 डे रिड्यूस हो गया. 16 बोथ, नो प्रॉब्लम. 16 बोथ. नाउ मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 2 days चाहिए ना आपको, 2 days, नॉट फॉर 1 day. अगेन ACE पाथ में
ACE path में again we can reduce C, no problem ना, we can reduce C, again ACE path में we can reduce C, C 6 days ले लो, then 15 crash time. अब CP क्या है, अब CP क्या है सेकंड डे के लिए, अब CP क्या है बताओ. You crashed C by 2 days, you crashed C by 2 days, what is CP? CP is again BDA, again BDA. हाँ, so again among BDA 2 दिन किसको आए, 2 दिन. You can crash B again, no problem. You can crash B. Anyone objecting? Anyone is objecting you? You can crash B, no problem. So again 150 plus 200, 350. B is crashed to 4 days. B is crashed to 4 days. So 15 days. Because C can be crashed up to 6 days. No? C can be crashed up to 6 days, no problem. C. If next third time you are crashing, C is not allowed. I will talk about it also. I will talk about it also. Okay, don't worry. So about what is the cost for? Minimum cost for crashing. Minimum cost for 2 days crashing. Minimum cost for 2 days crashing. Anyone having doubt इनके बारे में, Abhishek? Are you getting this? Yes, because of that only, Anisha, no doubt. Because cost slope was the lowest for C, that's why they are taking it. Chalo, now same data. Minimum cost for crashing 3 days. Minimum का because they are parallel activities. साथ में चल रहे हैं parallel activities ना. देखो मान लिया, this is one path, this is another parallel path. Two different parallel paths are there, and our CP is the longest path time. ये crash नहीं होगा, इनका path time भी continue करेगा. No use of crashing this. आप ये crash किया, 15 days आ गया. This is with 16 only. Then your project time is reduced. Project time is not reduced. Project time is 16 same only. That is why. So same data को minimum cost for crashing for 3 days. 3 days. Already for 2 days we have done. 700 rupees. Keep that. Then third day को can you crash C again? ACE path में can you crash C again? ACE path में can you crash C again? Because C का टाइम खत्म हो गया. Now out of A and E किसको crash करेंगे? ये को crash करो 175. Crash A 175 rupees. Then you crash A, 15 will become 14. Enough? Or do you need to disturb this also? BDE को crash करना पड़ेगा ना पड़ेगा? Do we need to crash BDE? BDE also crash करना पड़ेगा. So again shall we crash B? No, we can crash now, no problem. No. It is 6 days to 3 days. Only we brought to 4. You can make it now. समझ आ रहा है? A is crashed by 1 day. C already crashed by 2 days. Again one more day crash करो. So crash C के लिए, so not C, B के लिए, B. Crash B के लिए 200. So what is cost? 375. So total crash cost. समझ आ रहा है कैसा crash करेंगे? समझ आ रहा है बेटा, बताओ. 1075 rupees. Total crash cost for 3 days. 1075 rupees. Clear? ये क्लियर हो गया? और किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? If not given, एंड तक करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्रैशिंग कब तक करना पड़ेगा? नथिंग मेंशन, क्रैश द प्रोजेक्ट बोल दिया. एंड तक, एंड क्या है? कास्ट स्लोप ग्रेटर देन इनडायरेक्ट कॉस्ट. दैट इज ओनली एंड. आप क्रैशिंग के लिए 2000 रुपीस खर्चा कर रहा है. इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 500 रुपीस ओनली. देन यू कैन स्टॉप अननेसेसरी क्रैशिंग. समझ आ रहा है महिमा? So remaining students एक काम करो, मिनिमम कास्ट फॉर क्रैशिंग 4 डेज सॉल्व करो. ऐसे ही कैन राइट, आप सॉल्व करो सेम डेटा के लिए मिनिमम कास्ट फॉर क्रैशिंग फॉर 4 डेज. यश एंड महिमा, हैव आई टोल्ड दैट क्रैशिंग टॉपिक कंप्लीटेड? व्हाई यू आर वरीइंग एंड हरिंग? ऐसा बोलो अभी खत्म करेगा अभी. वी विल डू ईच एंड एवरी मॉडल. क्या? सो यू आर नॉट ए न्यू स्टूडेंट. आप न्यू स्टूडेंट जैसा इतना टेंशन ले रहे क्या यश भाई? नया स्टूडेंट होगा, टेंशन लेना ओके ठीक है, समझ आएगा. आप क्यों
अच्छा करो, बिकॉज फर्स्ट रीजन फॉर स्लीप इज क्लाइमेट। स्लीप का बारे में आपका क्लाइमेट डिफरेंट था, आपका घर का रहने वाला क्लाइमेट डिफरेंट था, बॉम्बे का क्लाइमेट डिफरेंट था ना, नींद इतना मुश्किल हो जाएगा पहले पहले, बट लेटर ऑन यू हैव टू एडजस्ट टू द बॉम्बे लाइफ। बॉम्बे लाइफ के चिल होने के लिए एडजस्ट होना चाहिए, तो नींद नहीं आएगा। 3 महीने के बाद आप भी बोलेगा सर नींद नहीं आ रहा, क्या करेंगे, ऐसा पूछेगा। एंड सेकंड पॉइंट, वी मस्ट बी स्टिक ऑन टू अवर गोल्स टारगेट्स। एंड ये हम क्या करने के उधर चले गए, हमारा रूट्स क्या है, हम कहाँ से आ गया, क्या करने के उधर चले गए, और इतना काम कर दिया आईआईटी बॉम्बे रीच करने के लिए। अभी कुछ गलत कर दिया तो ये पूरा वेस्ट हो जाएगा, अभी कुछ नहीं करा तो ये पूरा 3 साल का काम वेस्ट हो जाएगा। बताओ, you have placed your 3 years efforts to enter into IIT बॉम्बे। उधर टीटी करने के लिए, जिम चलने के लिए, स्विमिंग पूल चलने के लिए नहीं था ना, ये एफर्ट्स डाल दिया। आईआईटी बॉम्बे में क्या है, बाहर भी मिलेगा, जिम, टीटी, स्विमिंग पूल पूरा मिल जाएगा, बाहर में भी मिल जाएगा हमको। ये पूरा 3 साल का एफर्ट क्या करने के लिए हम। सो यू जस्ट रिमेंबर दैट एवरी टाइम व्हेन यू फील डिमोटिवेटेड, डिविएटेड, ये याद रखो एक बार। नहीं होगा केपी सर को याद रखो, केपी सर से तपन मिलेगा। सुनो, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, छोड़ो। इफ यू आर नॉट वरिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स, एक बार केपी सर को याद रखो, रिकॉल करो, केपी सर से तपन मिलेगा, 24 में रैंक आना चाहिए पक्का। नहीं होगा, केपी सर से तपन मिलेगा, ऐसा सोच लो। You went there not to depend on the professor, you went there to grow by yourself, by utilizing resources। आपका लाइब्रेरी यूज करो, आपका लैबोरेटरी यूज करो, आप खुद से डेवलप करो, हो जाएगा। कहाँ भी कभी भी प्रोफेसर कुछ नहीं बोलेगा, प्रोफेसर सिर्फ आपको काम दिएगा। IIT is not make you a spoon feeding student, IIT is to make you like a independent student, you can do the things by yourself, they won't provide you spoon feeding। अच्छा करो, so they make you to become independent। so that independence कैसा आएगा, लाइब्रेरी यूज करो, लैब यूज करो, सीनियर्स का हेल्प ले लो, और प्रोफेसर नहीं, नया वाला यंग असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा, लैब में होने वाला थोड़ा टैलेंटेड हो जाएगा, उनसे बात करो, उनका हेल्प ले लो, अच्छा हो जाएगा। I will tell you answer for this, Devu Malia। So till now these people studied by sitting home, watching classes online, talking with KP sir and RP sir since 1.5 years, 2 years। Suddenly they went into a college atmosphere where there are a lot of attractions, where there are huge work। So दो चीजें इनके लिए, there are so many attractions, और दूसरा चीज है ज्यादा वर्क काम करने के लिए, ये काम खुद से करना पड़ेगा। Immediately student will attract to second side only, not to the first side। And they need some time to adjust, only 1 month also not completed, just 15-20 days only, they need, it takes adjustment ना। अरे बचपन में एक स्कूल से और दूसरा स्कूल चलने के बाद हम क्या बोलेगा, हमारा पुराना स्कूल अच्छा है, नया स्कूल अच्छा नहीं, ऐसा भी बोलेगा ना। 5th स्टैंडर्ड में एक स्कूल है, 6th स्टैंडर्ड में स्कूल चेंज हो गया, हाँ नया स्कूल अच्छा नहीं है, हाँ ऐसा हो जाएगा। टाइम इज रिक्वायर्ड, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट विद टाइम, everything will be sorted out with time। 1825, 1575, 1775, 1825, wow, this many answers, that is why this many answers। minimum time required to crash by 4 days, by 4 days। already we know for 3 days 1075 rupees। 4th डे क्रैश करना पड़ेगा, 4th डे क्रैश करना पड़ेगा, 4th डे क्रैश करना पड़ेगा ना, 4th डे। अरे मिनिमम कास्ट ओनली बेटा, मिनिमम कास्ट ओनली, मिनिमम कास्ट। So C is not possible to crash, no? Is C possible to crash? ACE path में C possible to crash? देखो एक बार, C is 6 days, A is 4 days। C 6 days, इनका क्रैश टाइम रीच हो गया, ये 4 days, ये को भी इनका क्रैश टाइम रीच हो गया, ये को भी इनका क्रैश टाइम रीच हो गया। सो आप क्या क्रैश करना पड़ेगा, बस E क्रैश करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, यू नीड टू क्रैश E को क्रैश करा दो, E को क्रैश करा दो। नाउ व्हाट इज ACE पाथ, ACE पाथ को क्या, हाउ मेनी डेज आर कमिंग नाउ, ACE पाथ को हाउ मेनी डेज आर कमिंग नाउ, 13 डेज। नाउ BDE पाथ को हाउ मेनी डेज आर कमिंग, BDE पाथ को हाउ मेनी डेज आर कमिंग, यू क्रैश E, तब पर मिलेगा, मिल जाएगा जोर से, मिल जाएगा जोर से, 3 + 7 + 3। अरे E क्रैश कर दिया ना आदित्य, नवनीत, अमीशा, यू क्रैश E, BDE पाथ क्या हो गया बताओ अमीशा, यू क्रैश E, BDE पाथ भी 13 डेज हो गया। सो नो मोर क्रैशिंग रिक्वायर्ड। 500 रुपीज डालो E क्रैश करने के लिए, E क्रैश करने के लिए 500 रुपीज डालो, 1575 इज इनफ। समझ आ रहा है, 1575 इज इनफ। हु टोल्ड 1575? आई विल चेक। महिमा 1825, देवमालिया 1825, नवनीत 1825, निसी अंकुल वाओ गुड, सृजनी नाइस कीप गोइंग, अनन्या 1825, यशगारू 1325, भरद्वाज वेरी गुड 1575, रेवंत नो, अमीशा नो। हाँ ये आदमी बोल रहे हैं अच्छा कर दिया, ऐसा सोच के क्या बोल रहे हैं आदमी, बोल चाहिए थप्पड़ होना चाहिए देवमालिया गारू को। दिस वन, व्हाट इज द नेसेसिटी, ऑलरेडी यू क्रैश E। सुनो बेटा यशगारू, ये ACE पाथ में देयर इज नो मोर ऑप्शन, देयर इज नो मोर ऑप्शन टू क्रैश, ओनली पक्का ही क्रैश करना पड़ेगा ACE पाथ में। सो दैट इज मैंडेटरी। वंस यू क्रैश E, BDE पाथ में क्रैश के लिए कुछ जरूरत नहीं था, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट? वंस यू क्रैश देयर, BDE पाथ में कुछ क्रैश करने का जरूरत नहीं ना, बताओ। देन विल मूव ऑन, विल डू वन थिंग, विल डू वन थिंग। नेक्स्ट ये खत्म हो गया, चलो मिनिमम कास्ट रिक्वायर्ड for 5 days crashing, minimum cost required for 5 days crashing already existing 1575 plus ये खत्म हो गया, C खत्म हो गया, only you need to crash E, there is no possibility again। 500 करा दो, 500 करा दो, yes or no? So E is reduced to 2 days, E is reduced to 2 days, 20
75, 20, 75. Minimum cost required for 6 days crashing. 6 days crashing. A crashed already, C crashed already, E crashed already. Because E you can't go further crashing. E already reduced it to 2 days. E already reduced it to 2 days. Can you crash E again? Can you crash E again? So crashing not possible now. Is crashing possible now? Crashing not possible. So how many days maximum crashing to be done? So maximum the project is crashed by. Maximum project is crashed by. Maximum project is crashed by 5 days. And minimum cost is, and its minimum cost is 2075. समझ आ रहा है? Where to end crashing? महिमा गारू, where to end crashing? यश भाई बताओ, इतना परेशान में चल रहे बेटा, समझ आ रहा है अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. एक्टिविटी, ड्यूरेशन, कास्ट स्लोप. एक्टिविटी, ड्यूरेशन, कास्ट स्लोप. Do solve this one. Please do solve this one, guys. क्या हो गया बेटा? नेटवर्क भी डाल दिया ना अब. नेटवर्क आल्सो गिवन, why are you worrying? ₹80, ₹60. Okay, from your answers only we will make options. ₹80, ₹60, 80. आल है वो नंद. अरे दो वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज डालने के बाद 60, 80 आल है वो कैसा हो जाएगा बेटा? दिमाग यूज करो. Crash duration by 1 day required na? Means you can crash any activity with lowest cost slope. You can crash any activity with lowest cost slope. So इनके लिए पहले पाथ होना चाहिए हमको. फर्स्ट पाथ ADF. फर्स्ट पाथ ADF. ADF पाथ को how many days you are getting? A8, D9, F6, 15, 23 days. 23 days. Next, BEF. BEF. BEF path को how many days we are getting? 6, 9, 6, 21. 21 days. CF. CF. CF को 16 plus 6, 22 days. 22 days. और इन्हीं पाथ है क्या? और कुछ पाथ है क्या? AEF पाथ आएगा? How many of you missed AEF? AEF. 8 plus 9 plus 6. AEF path. Again 23. Again 23. So how many paths you need to crash now? To crash 1 day, how many paths you need to crash now? So 2 paths we need to crash. So possibilities of crashing. First you take common activity. First possibility crash A. A के crash करो आप, दोनों crash हो जाएगा ना? If you crash A by 1 day, A is in both the paths. A is in both the paths. So you can crash A by 1 day. ₹80 हो जाएगा ना? ₹80. Or there is also possibility you can crash F. F also you can crash. Both paths में is there. अरे इतना ज्यादा हो गया F के लिए.
ज्यादा पैसा होना चाहिए 130 रुपीज. You can crash D from path A. You can crash E from path B. path A में D crash करो 1 day. path last one में E crash करो 1 day. crashing D by 1 day 40 rupees. crashing E by 1 day 20 rupees. D 1 day crash कर दिया, E 1 day crash कर दिया. What you are getting 60 rupees में. So you crashed D by 1 day, so it is 22 days. You crashed E by 1 day, so this is 22 days. Finally, what is minimum cost? Yes, uncle. समझ आ रहा है? Who is given? Who given? Debu Malia Garu given. Revant. Only these two. Debu Malia and Revant. So how we are getting? How we are getting? समझ आ रहा है? चलो. Can you solve this? Can you solve this, beta? No one saying yes. क्या हो गया? अरे रेवंत जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? So activities, normal time, normal cost, crash time, crash cost given. Indirect cost is 250 rupees. मनीषा गारू, यश, महिमा, आपका मॉडल आ गया? आपका मॉडल आ गया देखो. So ये काम करो, पहले हर एक आदमी को कास्ट स्लोप निकाल दो. For every activity कास्ट स्लोप निकाल दो. 200, 100, 150. नेटवर्क डायग्राम बना लिया? नेटवर्क डायग्राम बना लिया? 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3. Simple, na? So we have two paths. Path 1 AC, path 2 B. Only two paths. Path 1 AC, 5 plus 3, 8 days. 8 days. B 7 days. So first we can crash this by 1 day. Make 7 days. किसको क्रैश करेंगे? 1 minute. 5 3, 5 3, 7. किसको क्रैश करेंगे A and C में? We can crash C. We can crash C. So first one क्या बोल रहे हैं? Crash by 1 day. Crash by 1 day. C. C reduce it to 2 days. C reduce it to 2 days. 150 rupees. 150 rupees. Now what is CP? Now CP is 7. हो गया. हो गया. Crash by 1 day हो गया बेटा. Crash by 1 day हो गया. CP is 150 rupees. Then crash by second day. C already finished its crash time, reached its crash time. C already reached its crash time. So you have to crash A and B. A के लिए 200 rupees, B के लिए 100 rupees. 300 rupees to crash by second day. 300 rupees to crash by second day. Crash cost greater than indirect cost. Crash cost greater than indirect cost. Yes or no, Chapandi? Crash cost greater than indirect cost. So stop crashing. Crash करेंगे इधर. Crash करेंगे इधर. No. No. So what is optimum time now? What is optimum time now? 7 days only. 7 days only. What is your savings by crashing? Savings by crashing. 1 day time saving. अरे पहले time saving बोलो. 1 day time saving. Then you expended 150 rupees. And indirect cost 250 rupees per day में ये save हो गया ना? 250 rupees indirect cost savings. 150 rupees crash cost. So saving is 100 rupees. Saving. So net saving क्या हो गया बेटा? Net saving क्या हो गया बताओ? 100 rupees. समझ आ रहा है? Is that clear? Now minimum project cost. Minimum project cost. Direct cost plus indirect cost plus crash cost. Direct cost plus indirect cost plus crash cost. Direct cost is
Sum of these values only. Sum of normal cost values is direct cost. 600, 700, 450. 600, 700, 450. Indirect cost is 7 days. Each day 250 rupees. Crash cost is 150 rupees. क्या है अभी 600, 700, 450, 7 into 250 plus 150. 3650. ये चीज बताओ विदाउट क्रैशिंग बोल रहे कॉस्ट 600, 700, 450. This is constant. Is it changing? Time is without crashing 8 days. 8 into 250, 3750. So which is beneficial? With crashing or without crashing? With crashing 3650, 1 day reduced. Besides 100 rupees, we are not worrying about 100 rupees ना. हम 100 rupees का बारे में नहीं सोच रहा. एक दिन टाइम कम हो गया. इधर 7 days में खत्म हो रहा है, इधर 8 days में खत्म हो रहा है. So 100 rupees भी benefit हो गया. Additional benefit of 100 rupees also coming ना. Very happy, खुश रहो, पार्टी करो देबू मालिया. 100 rupees आ रहा है एक्स्ट्रा, पार्टी करो. So now देबू मालिया thinking, शादी हम इतना ज्यादा नंबर ऑफ डेज मत करेगा, थोड़ा कम दिन में करने के बाद पैसा जमा करेगा. ऐसा सोच रहे ना देबू? You can save the amount. अरे whatever we are talking here in rupees, there is in lakhs. सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इधर हम 100 रुपीस में बोल दिया ना. 1 रुपीस इक्वल टू 1 लाख लेके चलो. बताओ 100 रुपीस इक्वल टू 100 लाख हो जाएगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में. 100 लाख मिलने के बाद क्या करेगा बताओ देबू मालिया? अरे नो चेंज. चलो कंप्लीटेड. No, that is normal cost is the cost for all the days, not for 1 day. Crash cost is only per day. Crash cost and indirect cost only per day, because crash cost we are taking from cost to slope. No? What is cost to slope formula? Crash cost minus normal cost, normal time minus crash time. So this is amount per day. So whatever we are taking crash cost is per day, cost to slope. But NC is for entire activity. It is not for one activity, it is for entire activity. पूरा का पूरा एक्टिविटी को करना पड़ेगा. चलो बताओ बेटा, व्हाट इज ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? कैसा हो जाएगा ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है? 140 rupees, 60 rupees, 110 rupees. That is only optimum project duration. 140 lowest, 60 lowest, 110 lowest. So 9 plus 7 plus 4. 9 plus 7 plus 4.
क्या आ रहा है? 20 days, 20 days, 20 days आ रहा है. 9 plus 7 plus 4, 20 days. Now, so you go through our graph. This is our graph, okay? So what is this? This is maximum possible cost, crash cost. This is the lowest possible time. Lowest possible time. When you take this is a normal time, and this we call normal cost. What we said, this is optimum duration, optimum cost. ये मालूम था ना आपको? ये मालूम था ना आपको? Please. So lowest possible time ले लो पहले. पहले from this lowest possible time ले लो. Out of all lowest, lowest क्या है? Lowest possible time. Lowest 8 days, and यहाँ से 6 days, यहाँ से 4 days. This one only ना? Yes or no? Lowest possible time from P, lowest possible time from Q, lowest possible time from R. So total 18 days. 18 days ना 18. चलो इनका कास्ट ले लो. 8 days 150, 6 days 70, 4 days 110. क्या है? ऐड करो बेटा, कास्ट ऐड करो. 330 days, 330 rupees. So this is the maximum possible cost, 330 rupees, and you are going to finish in 18 days. Maximum possible cost, and you are going to finish in 18 days. अब ले लो longest path, longest time, 10 days, 8 days, 6 days. 10 plus 8 plus 6, 24 days होए. 24 days. 10 को 160 rupees, 8 को 70 rupees, 6 को 130. क्या आ रहा है बताओ? 360 rupees. So you have done for longest possible time, shortest possible time. Based on time only you selected these values. You have not at all considered anything about cost previously. Anything about cost you have not at all considered previously. Based on time only, one is longest possible time, another one is shortest possible time. From graph आपको मालूम था optimum cost किसको हो जाएगा? For the lowest possible हो जाएगा ना optimum cost. Optimum time किसको मिलेगा? For a cost of lowest possible. So you are selecting lowest possible time 140, 140, 60, 110. Yes or no? From the graph कैसा मिलेगा आपको optimum time? Optimum time कैसा नहीं मिलेगा? Optimum time मिलेगा from optimum cost, lowest cost. Cost minimum, optimum cost actually it is lowest cost possible, lowest cost. So from each activity lowest cost क्या है? 140, 60, 40. So what is cost? 140, 60, 200, 110, 310 rupees. 310 rupees. 310 rupees. And what is optimum time? 9 plus 7 plus 4, 20 days. 20 days. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ग्राफ अभी समझ आ रहा है बेटा? एनी डाउट इनके बारे में? एनी डाउट ग्राफ के बारे में? और कुछ डाउट होगा पूछ लो, अभी पूछ लो बेटा जल्दी. चलो, this is done, this is also done, I think. हाँ, that is only ना always नहीं होगा. क्रैश कॉस्ट कैसा हो जाएगा? देवमाल्या योर फार्मूला, कास्ट टू स्लोप फार्मूला सैटिस्फाई कैसा हो जाएगा? नहीं होगा तो हम इंडिविजुअल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं. That is the total project का कास्ट था ना बेटा. So that is the reason you are not selecting this. That is the reason you are selecting this. Instead of 24 days, actually you have to get it. You are crashing to 20 days only. That is the reason. You are crashing to 20 days only. That is the reason, not to 18 days. Because 18 days को crash करने के बाद cost increase हो जाएगा. 18 days को crash मत करो. There is a possibility to crash to 18 days also. There is a possibility to crash to 18 days also. Don't crash to 18 days. Crash to 20 days, 24 to 20. So cost does not increase. That is why na beta. That is why 20 days is optimum. This is acceptable. This is acceptable. You can go for 18 days only ना. समझ नहीं आ रहा है?
Can you solve that? क्या हो गया भैया, इतना टाइम लग रहा है? नेटवर्क बनाओ पहले. From P, Q and R, S is going to R. Or S is coming from R. Okay. This is the diagram. 3745. 3745. So we have the paths. We can write the path. PQ. PQ for 10 days. 10 days. PRS. 12 days. We have two paths here. We have two paths here. PQ, PRS. PQ and PRS. And P is having highest cast slope. So instead of touching P, we can take R and S first. Because we need 12 days to 9 days, no? The conversion. 12 days is to be crashed to 9 days. 12 days is to be crashed to 9 days. 3 days reduction. So first Q and R ले लो. Q and R ले लो. QR में 100 rupees, 400 rupees. So you can crash Q by 2 days हो जाएगा ना? You can crash directly Q. Yes or no? You can crash directly 1 minute. R and S. Sorry. R and S. R के लिए 400, S के लिए 200. Which we can crash? We can crash S by 2 days. Crash S by 2 days. So what is crash cost? What is crash cost? Per day 200. 400 rupees per 2 days. 400 rupees per 2 days. S is reduced to 3. So now what is the path? Critical path. PQ 10. PRS 10. Both 10 हो गया. समझ आ रहा है? S क्रैश हो गया. S क्रैश हो गया. 400 रुपीस कच्चा कर दिया. 2 दिन यूज किया. खत्म हो गया. PQ 10 and PRS 10. PQ 10 and PRS 10. Now, what are opportunities? What are crash options? Crash options लिख दो. What are crash options? Crash P by 1 day. Crash P by 1 day. What is the cost? 500 rupees. If you are crashing P by 1 day, both will be crashing. Both easily crashing. Both easily crashing. You are reducing 1 day here. Ultimately 1 day reduced here. Instead of it, you are selecting Q. Then along with QR. Q 1 day कम करो, R 1 day कम करो. Anyway same coming. Crash Q and R by 1 day. एक दिन Q, एक दिन R. 100 plus 400. Again कच्चा क्या हो गया? Again expenses 500 only. Crash Q and S by 1 day. Because there is no limit ना. Is there any limit given? Yes crash करने के लिए. So yes 2 days करो, Q 6 days करो. So that path 369, 342, 9. S के लिए 200, Q के लिए 100. 300 रुपीस में हो जाएगा ना? 100 plus 200. 300 में हो जाएगा ना? Which is lowest now? Which is best suitable crashing option? बताओ. अब बताओ बेटा. अब बताओ what is the lowest possible cost? Best possible crashing option. What is the best possible crashing option? We'll take this. We'll take this. So total crash cost. Total crash cost. First 400, now 300, 700 rupees. Total crash cost क्या हो गया? समझ आ रहा है? 9 days मिल गए आपको. P is 3 days, Q is 6 days. P 3 days, R 4 days, S 2 days. दोनों पाथ में 9 days आ गया ना? खुश रहो. दोनों पाथ में 9 days आ गया ना? खुश रहो. चलो चलो बताओ. दोनों पाथ में 9 days आ गया.
Now total cost of project, 10,000 rupees, 9 days every day overhead cost 200, crash cost 700. ये indirect था ना, overhead cost is indirect cost. So what is the answer? 12,500. Clear to everyone? Clear to everyone? I have a doubt here. ये indirect cost 200 rupees हो गया, आपका इधर crash cost 300 हो गया. Crash कैसा कर दिया? क्या रे बेटा बताओ? Indirect cost 200 rupees given, crash cost 300. But question is not about optimum duration, na? Yash Garu. Question is not about optimum duration. If you want to crash down to 9 days, what is cost? That's it. By any chance you can crash it. Bring down to 9 days, 12 days to 9 days लेके आओ. हमको कुछ टाइम नहीं, 9 days में खत्म होना चाहिए, खत्म करो, कास्ट बोलो. Question is about optimum duration. And optimum duration क्या है? Question is about optimum duration. What is your answer? Question is about optimum duration. What is your answer? You can go for 10 days. Don't crash for 9 days. Logic है ना बेटा? They are not at all asking you to find optimum duration. They are asking you what is the cost if you want to finish the project by 9 days. अरे क्लाइंट आ गया आपका साथ, क्लाइंट बोल रहे हैं अरे आप कुछ भी करो, हमको प्रोजेक्ट 9 days में खत्म होना चाहिए, पैसा ले लो बोलेगा क्लाइंट. देन कितना पैसा चाहिए? दिस मच. समझ आ रहा है? पैसा ले लो बोल रहे क्लाइंट, सिर्फ 100 रुपीस एक्स्ट्रा, नॉट मोर देन दैट. इवन द डिफरेंस क्या है? एक दिन कम हो गया 100 रुपीस एक्स्ट्रा, क्लाइंट को कुछ फर्क नहीं चलेगा. 1 लाख होगा तो कुछ फर्क नहीं है क्लाइंट को, क्लाइंट इतना रिच आदमी था. So question is not about all these things. Question is about to finish that project in 9 days. What is the cost? You must do by anything 9 days cost. That's it. This is not done. This is done. This is done. No, without crash cost, who is asking question? Mahima. For total duration of 25 units of time. Total duration of 25 units of time. Least total direct cost to be complete the project will be. पहले डेटा ले लो, समझ आएगा आपको थोड़ा. This is for P, this is for Q, this is for R. What they are saying? Small project consists of 3 activities PQR, executed in that sequence only. Previously we did not. Same, executed in that sequence only. Relationship between time duration in units, T, corresponding total cost C units. Alternatively, mutually exclusive possible durations of each activity are given. Table हो गया, data ले लिया. So you need to finish in 25 days. Okay. Lowest possible time given. Time is given to you. 25 दिन में खत्म होना चाहिए. Least total direct cost क्या है? Solve करो अभी आएगा. So it is like a aptitude question. थोड़ा try करो, 25 days में खत्म होना चाहिए project. पहले ऐसा ले लो. No, they want to finish in 25 days. It is not about optimum time and all the things. Same like previous question. They are not worrying optimum time. They are not worrying crash time. They are not worrying about normal time. They want to finish the project in 25 days. What is the lowest possible cost you can give? You need to give the quotation. Devu Malia, you are the contractor. Okay, you are the contractor. Your client is asking you to finish in 25 days, and these are your subcontractors. 3 activities, 3 works are there. Your subcontractors. PQ are your subcontractors. They have provided you the data. आप बताओ कितना दिन में चाहिए? P is saying if you want to finish in 8 days 250, 9 days 235, 10 days 225, 11 days 250. And Q is saying 8 days में ये कास्ट हो जाएगा. R is saying 8 days में ये कास्ट हो जाएगा. आप बताओ, बोल दिया. So now you need to give the client the best possible deal, cost, lowest possible cost. समझ आ गया? Got it guys? आपका client का डिमांड है 25 days में खत्म होना चाहिए प्रोजेक्ट. You are a contractor, L&T. Then subcontractor को दे रहे हैं, subcontractor का टाइमिंग्स एंड डिमांड्स ऑफ कॉस्ट दिया. 25 days में खत्म होने के लिए तैयार हो गया. चलो बताओ. So what is the first work I can do? I can do go with the lowest cost. Is that possible? I will check now.
lowest cost. Cost is important here. See, you are finding out for the lowest cost. 215 rupees, 275 rupees, 350 rupees. टाइम इज इंक्रीजिंग, इतना ज्यादा हो गया टाइम, ये नहीं हो जाएगा ना, 21 32 डेज हो गया, सो ये पॉसिबल नहीं हो है, टाइम लेने के बाद पॉसिबल नहीं हो है, टाइम लेने के बाद पॉसिबल नहीं हो है। चलो 8 डेज ले लो, लोएस्ट पॉसिबल 8 6 8, 20 डेज में खत्म हो रहा है, 20 डेज में खत्म हो रहा है। नो भाई, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हमको 20 डेज में खत्म हो रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाएगा। सो बेस्ट पॉसिबल 25 डेज कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, बस बेस्ट पॉसिबल 25 डेज कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। सो 8 9 8 ये 8 डेज में चल रहा है 250 रुपीस आ गया, 9 डेज में चल रहा है 275, 8 डेज में चल रहा है 400। ये बोल रहे हैं आर के लिए, सुनो थोड़ा, आर के लिए ऐसा ले रहा है हम, आर के लिए this is the lowest possible time 8, that is best because if you are taking 10 and 12 that will affect the workload of P and Q. If you go with the 10 days and 12 days, so R के लिए lowest possible time को चलो, that will affect, otherwise that will affect workload of P and Q. lowest possible time पे चल लिया, 8 days ले लिया R के लिए 8, so remaining 17 days, 17 days को distribute करो, ले लो 10 plus 7 225 325 545 हो रहा है, 545, 10 plus 7 लेने के बाद 545 हो रहा है, 9 plus 6 लेने के बाद 575, so 9 plus 6 कट करो, 9 plus 6 नहीं कट करो, ज्यादा हो गया, and 11 plus 4 not possible, there is no option of 11 plus 4, and what is left over, what is left over, 8 plus 9 only ना, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, 17 चाहिए हमको, 17 चाहिए हमको, 17, so that is only you can go 8 9, are you getting? It is simply number combination try करके आंसर देना पड़ेगा बस, that's it, नंबर कॉम्बिनेशन ट्राई करके आंसर देना पड़ेगा बस, 250 plus 275 plus 400, 250 plus 275 plus 400, 925, okay, we can try for other methods also but best result will be this one only. चाहिए तो चेक करो, ये 375 I have taken 10 days, 375, 9 plus 6 15 हो गया, 375 plus 340 plus 235 क्या है 950, so that is rejected only, rejected only. If I start with taking 10 here, start with taking 10 here, that is rejected only. और 10 plus 5 नहीं possible था, 11 plus 5 नहीं possible था, possible 8 plus 7, 8 plus 7 possible, 8 plus 7 possible होगा, 250 320 400 375 क्या है, 250 320 375 क्या है बेटा, 945, वो भी ज्यादा हो गया, वो भी ज्यादा हो गया, so that 10 days is rejected here. So 3 units में 1 का फिक्स्ड टाइम रख के रिमाइनिंग दोनों का, समझ आ रहा है, 1 में फिक्स्ड टाइम रख के रिमाइनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। देन 12 ले लो, नाउ लास्ट वन 12 ले लो, रिमाइनिंग 13 डेज था ना, 13 डेज, 13 कैसा आएगा, 11 लेने के बाद नहीं हो जाएगा, 10 लेने के बाद नहीं हो जाएगा, 9 लेने के बाद नहीं हो जाएगा, 8 लेने के बाद 8 plus 7 नो, 8 plus 6 नो, ये कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं मिलेगा ना, इफ यू टेक R is equal to 12 13 डेज कॉम्बिनेशन नहीं आएगा ना, नॉट पॉसिबल, ये समझ आ रहा है बेटा, इफ यू टेक R is equal to 12 ये कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं आएगा, देन R is equal to 10 लेने के बाद all costs are higher, so we go with R is equal to 8, कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, then we try different combination. So what we can do, one activity का टाइम फिक्स करो and then try different activities to get a target time, by various combinations. Lowest time combination is selected, so it is aptitude question na? Lowest time of combination is selected, simple. चलो ऐसा भी करो, बट हम क्यों मार्क्स सेलेक्ट किया, आर में सिर्फ 3 है और एलिमिनेशन भी इजी हो जाएगा, ज्यादा दिन है ना 12 डेज, आर में सिर्फ 3 है, सो कॉम्बिनेशंस कम हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिड्यूस हो जाएगा, आर में 3 कॉम्बिनेशन होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिड्यूस हो जाएगा। महिमा दिस वन वेट, ये स्लाइड में वेट करना पड़ेगा, प्रीवियस स्लाइड में दिस वन ओनली, ओके। क्या हो रहा है बेटा, मिस्सी अंकुल कुछ डाउट्स है एनवायरमेंटल में, मिस्सी अंकुल को कोई डाउट नहीं आएगा ना, क्योंकि मिस्सी अंकुल के पास जेड है डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए। crashing of project duration, always increase cost of project, always नहीं हो जाएगा ना, कभी कभी हो जाएगा, कभी कभी कम हो जाएगा, अल्टीमेटली ये फॉल्स होगा, स्टेटमेंट टू ट्रू हो जाएगा ना, नो डाउट। ऑप्शन डी, critical path along project activities network diagram is compressed in the process of investigating crashing of project duration and not the non-critical activity. This is yesterday I asked him, are you going to crash critical activity, non-critical activity, पूछ लिया ना कल, so you are not going to crash non-critical activity, not the non-critical activity, you are going to crash critical path activity, crashing of project duration,
critical path activity, and that too certain stage only, very clearly mentioned, certain stage of crashing, up to certain stage 2. और एक मॉडल सेम लगा दिया, ऑप्टिमम ड्यूरेशन पूछ रहा है, ऑप्टिमम ड्यूरेशन फॉर मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम ड्यूरेशन फॉर मिनिमम कॉस्ट. सो मिनिमम कॉस्ट बोल दिया ना वेरी क्लियरली, मिनिमम टोटल डायरेक्ट कॉस्ट बोल दिया फॉर ऑल 3 एक्टिविटीज. सिंपल नाउ, क्वेश्चन आसान हो गया ना, मैंने यूज दैट वर्ड. क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा, व्हाट इज ऑप्टिमम ड्यूरेशन फॉर करस्पॉन्डिंग मिनिमम टोटल डायरेक्ट कॉस्ट फॉर ऑल द 3 एक्टिविटीज. सो कॉस्ट का लोएस्ट 14, कॉस्ट का लोएस्ट 6, कॉस्ट का लोएस्ट 11, सो 9 + 7 + 4 हो गया, आंसर मिल गया 20 डेज. समझ आ रहा है? इज दैट क्लियर गाइस? वेरी क्लियरली, दे आर वेरी क्लियरली रिटन. देखो क्वेश्चन इतना क्लैरिटी दे रहा है, व्हाट इज द ऑप्टिमम ड्यूरेशन फॉर करस्पॉन्डिंग मिनिमम टोटल डायरेक्ट कॉस्ट फॉर ऑल 3 एक्टिविटी. हर एक एक्टिविटी को, ऑल 3 एक्टिविटी को मिनिमम टोटल डायरेक्ट कॉस्ट लेने के बाद व्हाट इज ऑप्टिमम ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड 20 डेज. चलो हो गया. In a construction project, the cost slope of an activity is an indication of cost slope. किसको इंडिकेट कर रहे हैं? When you are talking about cost slope, what it indicate? Cost slope is extra cost, आपको मिलना चाहिए. Cost slope representing crashing बेटा, crashing of activity. Cost slope is representing crashing of activity ना. Which one of the following is objective in crashing? Crashing का ऑब्जेक्टिव क्या है? और किसी को डाउट है जल्दी बताओ, crashing का ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा, बस ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा. कास्ट टाइम कर्व, स्लोप ऑफ कास्ट टाइम कर्व के बारे में बात कर रहे हैं. स्लोप ऑफ कास्ट टाइम कर्व के बारे में. इट इज गिवन बाय डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कास्ट एंड क्रैश कास्ट डिवाइडेड बाय क्रैश टाइम. नो, रॉन्ग. इट इज गिवन बाय डिफरेंस बिटवीन क्रैश कास्ट, नॉर्मल कास्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन क्रैश टाइम एंड नॉर्मल टाइम, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन सीसी एनसी, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम. उल्टा देना पड़ेगा ना. डिफरेंस बिटवीन एनटी माइनस सीटी लिख दिया ना हम. क्या बेटा? महिमा, अरे भरद्वाज गारू, यश गारू, चपंडी, नवनीत, आर यू राइटिंग डिफरेंस बिटवीन क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम? आर यू राइटिंग द डिफरेंस बिटवीन क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम? फार्मूला लिखो. नॉर्मल कास्ट, क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट बाय क्रैश टाइम बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. दिस इज ओनली राइटिंग. सो क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट ऊपर, नीचे नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. बताओ डिफरेंस बिटवीन, ऑर्डर चाहिए ना, ऑर्डर. It is given by difference between crash cost and normal cost divided by normal time. गलत. Crash cost divided by crash time, वो भी गलत. Crash cost divided by crash time, वो भी गलत ना. Yes, marks to all. They have given answer C, but actually it is a marks to all because they want to take this one. They want to take crash time and normal time. They have to take in the order. So this is a marks to all question. देखो देखो next immediately आ गया. बताओ, बताओ आंसर क्या है. महिमा गारू, चपंडी, चलो अगेन. देखो क्रैश कास्ट स्लोप फार्मूला को हाउ मेनी टाइम्स द क्वेश्चंस आर कमिंग. देखो बेटा, क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट, क्रैश कास्ट माइनस नॉर्मल कास्ट, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. नो नो, हाउ मेनी पीपल कैन शाउट? यूपीएससी के कुछ नहीं है ऐसा. दिस इज एक्टिविटी पी, दिस इज एक्टिविटी क्यू, दिस इज एक्टिविटी आर. सो पी क्यू आर सेम फॉलो, पी क्यू आर सेम दे आर फॉलोइंग. Direct cost of these activities given for all 3 activities taken together, minimum possible direct cost for 21 days. समझ आ रहा है? मिनिमम कास्ट बोल दिया, बट टाइम दे आर फिक्सिंग फॉर 21 डेज. सो ये 21 डेज किसको आएगा, कैसा आएगा, हम फिक्स करना पड़ेगा. पहले हम फिक्स करना पड़ेगा 21 डेज कैसा आएगा. मिनिमम कास्ट वाला देखो पहले. मिनिमम कास्ट 12, 20, 40, 7, 8, 9. नो, नॉट पॉसिबल. 7, 7, 7 is final combination. 7, 7, 7 फाइनल कॉम्बिनेशन. 7, 7, 7 को क्या है? 12 + 23 + 45. 7, 7, 7 को क्या है? 12 + 23 + 45, 80. देन 6, 7, 8 बोल रहे. 6, 7, 8, 14, 23, 42. इनको क्या है? 79. सो दिस इज ओनली ना. नाउ दिस इज ओनली ना बेटा. क्या है मिसी अंकुल? सो ये कॉम्बिनेशन अच्छे से ट्राई करना पड़ेगा. हाँ वो भी बोल रहे कॉम्बिनेशन अच्छे से ट्राई करना पड़ेगा. सो 21 डेज होना चाहिए. सिंपल लॉजिक बेटा सुनो. 21 डेज होना चाहिए. हाईएस्ट डेज ये 9, ये कट करो. 21 डेज में 9 डेज देने के बाद 12 डेज में चलना पड़ेगा. 12 डेज में चलने के लिए 27 + 14, 37, 41, 81 हो रहा है. 81 इज हायर देन दिस 2. सो 9 को सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन था, 6 and 6, और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं. 9 कट कर हाईएस्ट वाला
पूरा का पूरा में हाईएस्ट वाला कौन है 9 9 कट करो नेक्स्ट हाईएस्ट 8 को 8 8 लेके कैलकुलेट करो मिल जाएगा देखो 8 लेके कैलकुलेट करने के बाद आपको मिल जाएगा 79 सो आंसर इज 79000 और एक आ है महिमा 668 665 नो 6 कहां है इनमें 6 नहीं था ना ये कॉम्बिनेशन में 6 कहां है आर में 6 नहीं है ना महिमा आप गलत कर दिया 668 वो भी रॉन्ग है 6 6 12 plus 8 20 ओनली वो भी रॉन्ग है हमको 21 डेज चाहिए सो दिस इज ओनली 79000 ओनली आंसर चलो सो टुमारो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर रिसोर्सेस एलोकेशन करेंगे कल ओके वी गो विद रिसोर्सेस एलोकेशन टुमारो एनी मोर क्वेश्चंस सो आपको कुछ डाउट होगा एनवायरमेंटल के बारे में आपको कुछ डाउट होगा 2 बजे क्लास को आ जाओ नो डे आफ्टर टुमारो इज लास्ट क्लास नवनीत आई थिंक मंडे विल बी द लास्ट क्लास मंडे डे आफ्टर टुमारो नहीं मंडे लास्ट क्लास है मंडे भी क्लास है ओके बाय बाय